वक्त चल रहा है बहुत धमाकेदार, किसी की शादी हो रही है तो मैं 1 मिनट शांत बैठ जाता हूँ, उसके बाद जब चुप हो जाएगी ये फायरवर्क से, देन आई विल स्टार्ट अगेन। चलो पटाखे तो रुक दो भाई, थोड़े बहुत ढोल बज रहा है तो। क्या हाल सबके? शिवम भाई हाल तो ठीक ही है, मतलब जिस तरीके से इंडिया खेली है उसके बाद तो क्या ही हाल बोलूं बट फिर भी ठीक है, चल जाएगा, काम चला हुआ है, यू नो। इतने बुरी तरीके से हारना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं, बट ठीक है, क्या ही बोल सकता है। That's what happens when you play, good teams once in a year। जो वाला सीन है कि तुम खुद टीमों से ही खेलते रह जाते हो, तो यही लेवल रहता है तुम्हारा। जहान भाई क्या हाल? हेलो अर्जुन भाई, हेलो शरण भाई, क्या हाल चाल सबके? भाई इसी पे है पूरी स्ट्रीम आज। आई एम जस्ट गोइंग टू लाफ एट दिस थ्रू आउट द स्ट्रीम। मतलब हम बात करेंगे भाई इस पे, थोड़ा बहुत लिट के बारे में भी बात करेंगे, एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट फेक जासिम वाला जो थोड़ा सा सीन, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। सो विजन भाई राम नाम, और 17 मंथ्स आई थिंक ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। जयन भाई 17 मंथ्स का टैग आई थिंक आई एम वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। 16 मंथ्स वाले थे, बट हाँ पिछले कुछ टाइम से स्ट्रीम भी नहीं किया, तो भाई लगता है महीना कुछ ज्यादा ही जल्दी फ्लाई हो गया। सो कोई सीन नहीं है भाई, कोई सीन नहीं है। ही लॉस्ट अ बेट, तो उसको इंडिया वाली गेम कवर करनी थी, व्हिच ही वाज डूइंग टुडे, ठीक है। नाइजीरियंस राइज अप हो गए, क्या ही बोल दूं मैं, फिर छोड़ो। बिल्कुल रोहित भाई, क्या हालचाल? कोई थॉट नहीं है भाई, कोई थॉट नहीं है। ऐसी टीम पे क्या थॉट होगा बताओ, जो कि ना तो प्रॉपरली ट्रेंड है, ना तो प्रॉपरली बैक्ड है। क्या बोलूं मैं? क्या हालचाल अनुराग भाई, हाउ आर यू? बेट वाज, किसी ने बंदे ने डाला था कि इफ ही कैन गेट 1000 लाइक्स ऑन अ पोस्ट विल ही कवर इंडिया गेम। उसको क्या 10-11 हजार लाइक्स आ गए उस बंदे के। इसने इंडियन फुटबॉल ट्विटर को इसने हल्का ले लिया थोड़ा। करण भाई गुड इवनिंग। खरीदेंगे कोई नहीं भाई, ऑब्वियस सी बात है भाई। डिलीट का इंजरी का भी सीन रहा है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक डिलीट पिक्ड अर्ली, मतलब मैं चाहूंगा कि आए, बट वही है फिर कट प्राइस डील में। भाई इट्स नॉट अबाउट, भाई कहीं पर भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगी, ग्रास रूट से कुछ है ही नहीं। दिस टीम प्लेज अ क्वालिटी टीम वंस इन 1 ईयर, ठीक है। क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये बांग्लादेश, ठीक है, अफगानिस्तान, ये इन्हीं से, नेपाल, इन्हीं से खेल के खुश है। व्हाट आर यू गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस? जब इनके सामने आ जाता है फिर एशिया के टॉप टीम्स, तो कहां से खेलोगे? छोड़ो भाई। आई गेस 3-0 ही रहा ना फाइनल स्कोर लाइन। व्हाट वाज द फाइनल स्कोर लाइन? मैंने तो 2-0 पे बंद कर दिया था भाई। बिल्कुल भाई, लिंक्स आ नहीं रहे हैं, लिंक्स बनाए जा रहे हैं किसी को भी यूनाइटेड से लिंक कर दो, ऐसे लिंक बनते हैं, आते नहीं है भाई। ऑब्वियस सी बात है, विनीशियस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। मतलब इसको बोलते हैं डेस्परेशन रिपोर्टिंग, ठीक है, ठीक है, एब्सोल्युटली डेस्परेशन रिपोर्टिंग। कहीं नहीं जा रहा सुनील भाई, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर, इट्स अ डेस्परेशन रिपोर्टिंग यार। इनकी बातों को अगर सुनोगे ना तो फिर यू वोंट बी, इनकी हर बात को तुम सीरियसली लेने लग जाओगे। इट्स डेस्परेशन रिपोर्टिंग। उनको क्लिक्स चाहिए अपने आर्टिकल पे, तो विनीशियस पे यूनाइटेड भेज दो, ठीक है। अभी राजकोट को लिंक कर दो लिवरपूल से, राजकोट को 1000 गालियां पड़ जाएंगी, जबकि लोगों को पता है ये मूव होगा नहीं, बट स्टिल ही विल बी एब्सोल्युटली बुचर्ड ऑन सोशल मीडिया। फेयर इनफ भाई। संकेत भाई, आई एम फाइन, हाउ आर यू? भाई कंप्लेन ये आ रही है कि ही वाज नॉट सेंडिंग अ लेटर ऑफ फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, जिसको बोलते हैं कि भाई ही इज विलिंग टू पुट अप, पेपर पे साइन करके वो देने को तैयार नहीं था, ठीक है।
he was talking about making a bid. अब देखो यार, ये ऑफिशियली रिपोर्ट डाली गई है, दैट मींस इट्स गोइंग टू बी ट्रू, ठीक है। अगर कोई ऐरा गैरा कोई रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था तो मैं उस चीज को नहीं मानता, बट ये अगर इसमें कोई झोल झाल करेंगे तो दे विल हैव टू फेस चार्जेस, ठीक है। जो मेंबर्स है भाई, मेंबर्स को आर्टिकल भी गया होगा रिगार्डिंग दिस, जो मैंने आर्टिकल भेजा उसमें इसमें पूरा डिटेल में बताया मैंने, ठीक है। एक बार और भी मैं अच्छे से पढ़ देता हूँ, जो पहली बार इधर आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं पढ़ देता हूँ कि सबसे जो चीज है, ठीक है, एक चीज बता देता हूं कि एक तो ये बात कि 170 बिडर्स थे। अब वो कौन थे भाई, भगवान जाने, ठीक है। तो 170 बिडर्स कौन थे, या बेंजेमा टू आर्सेनल, ये भी आ रहा है भाई। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, कुछ है ही नहीं, कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं है। कोच को भीख मांगना पड़ता है भाई, मेरे को प्लेयर्स दे दो, मेरे को प्लेयर्स दे दो, क्या करोगे। अच्छा भाई, माइक भी दिन का तीसरा या चौथा आर्टिकल रहा होगा, तो मैं वो फिर लेजेंडरी मेंबर्स को जाते हैं फिर। चलो ठीक है, मैं भेज दूंगा इसको फिर से, ठीक है। द आर्टिकल क्या बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं, इन दैट डॉक्यूमेंट 15 अक्टूबर डेट बताया है, जिसमें शेख जासिम आउट ऑफ द पिक्चर, ठीक है। अक्टूबर तक ही वेटेड, बिफोर दैट, आफ्टर दैट ही लेफ्ट, ठीक है। रेन ग्रुप वांटेड $35 पर शेयर, अल थानी का था $30 per share, so he was not willing to pay 35, he was willing to pay 30, and then Sir Ratcliffe got it for 33, 35 पे उन्होंने भी नहीं लिया, बट 33 पे लिया। मैन सिटी का ट्रायल डेट नहीं पता भाई, हाउ मेनी पॉइंट्स, नो आइडिया भाई। मार्च की कहां बात करूं मैं, यहाँ तो फेब नहीं आया अभी। बिल्कुल भाई, that's what I'm saying. See, it is called desperation reporting in my opinion. You know, link any player to United because you know you're going to get the clicks. In the meanwhile, guys, listen to Vaishnavi and whoever is on the stream, make sure you are liking the stream. Likes are free, okay? Absolutely free. So, that's why I said, you know, I'm not even thinking about March yet. You know, we don't even have to worry about March. Let's get into Feb first. You know, outside top 10, I don't think so. Malin, welcome to the stream. नहीं भाई, it's not on the federation. Federation के हाथ में नहीं है. It depends on the government, and we don't allow dual, citizenship. Simple. Top 4, in my opinion, it's going to be very, very difficult. I still feel that we are on the horizon. Okay, we are not completely out of it, but for that we need to be, going on a superb run to have even a chance. Otherwise, no. Thanks a lot. But he will stay. I don't know why people are thinking he won't stay. He will stay. He will stay for one season under Ineos. If he performs, fine. Otherwise, he will perish. भाई I don't think so. AIFF इसमें कुछ कर ही नहीं सकता यार. कुंजन भाई, government needs to say, okay, you guys can come out and you guys can play. वो government की policy होती है. AIFF नहीं बना सकता policy. In summer, we will make 3 signings. 3. We need more than that, but I think we will make 3 signings. Ineos would want to start on a high. So I think 3 will be there. Maybe 1 or 2 look, I'm not expecting 150 million signings. I am expecting 60, 65, 70 million signings. Just like City, the way City operates. Benzema for 6 months, I will love. I have been saying this. 6 महीने के लिए for someone like Rasmus Højlund, he can get so much experience from someone like Benzema. Right, that's where the structure comes into place, which the new owners will have to put up. भाई WhatsApp ग्रुप तो है ही, WhatsApp ग्रुप कहाँ जाएगा?
members keep on increasing and decreasing, the group stays. No, I don't think so. Come on. By India, it's not even the first choice for Turkey. How is he better than Onana? Not next level, but obviously the level will improve. Next level, तो भाई जब तक you are not investing in the grassroots, you are not going on next level. It's as simple as that. Regardless of whoever we get in, if you are not investing in long term, you are not going to improve as a team. Yeah, simple सी बात है. It's not like all of a sudden you are including the players from outside and all of a sudden you will be champions. It's not gonna happen. Of course, Shakil, it's a joke. Hello, Tenda bro, how are you? See, Amrabat signing, we wanted Amrabat 2 months before we actually signed him. Sunil bhai, to be very honest. The time we signed Amrabat, he got injured while training on his own. He did not have any match rhythm. He did not go on any training sessions with the team. By the time he came in, there was no, pre-season fixtures in which he can play. So when you make signings, on the last day of the transfer window, that's the kind of signing you get. Amrabat is quality. I'm not saying Amrabat is a bad player. It's just the way we have handled it. It's just, we have handled with so many players in the past. Absolutely rubbish, bhai. Absolutely rubbish. As I said, it's desperation reporting. Guys, those who want to join the WhatsApp group, मैं WhatsApp group का link जो है वो share कर देता हूँ भाई. Those who want to get into the WhatsApp group, I will share the link. एक second दो. Give me 1 second. I will do it. As I said, people keep on coming and going. ग्रुप पे भाई अच्छे से ढंग का सेंसिबल डिस्कशन भी चलता है. Banter is also there. So those who want to join the group, they can join through the link. I am putting up the link right now. Give me 1 second, guys. Hello, Professor Bhai. Welcome to the stream. Hello, bhai. This is the group link. This is the group link. Whoever wants to join in, join in. जिसको शेयर करना है भाई, जिसको शेयर करना है शेयर भी कर दो. If other United fans wants to join in. Shelton, how are you, brother? Exactly. He started with left back. At least 2 to 3. Yeah, time flies. Time flies. Mount को कुछ नहीं हुआ भाई. Mount is already training. But when you get injury, all of a sudden तुमको टीम में नहीं डाल देंगे यार. You need some time to get back. Because 6 महीने बचे हैं सुनील भाई. If you terminate his contract now, वो 6 महीने के पैसे तुम्हें देने ही पड़ेंगे. ठीक है. उससे बढ़िया है कि भाई तुम उसको रख लो 6 महीने. You might be able to use him for 5 months, not 6 months, 5 months. ठीक है. Because we are not activating the clause for 1 other year. So he's gone in summer. ठीक है. So we don't have to worry about Martial anymore. अरे कहीं नहीं जा रहा भाई वो. As I said. बिल्कुल बढ़िया अंतरिक्ष भाई. How are you? अरे that's great, Arman bhai. In the meanwhile, as I keep on saying, those who are joining in, thanks a lot for joining in. So मैं देखो अभी तुम्हारा लेवल वही है. बुरा मत मान मनीष भाई. But I'm not talking about level in terms of players. I'm talking about level in terms of no money. तो तुम्हें ऐसे ही जो फ्री वाले बंदे बचे हैं, you will have to bring those players to the club. It's as simple as that. And नहीं भाई, we are not giving Martial another year. He is done at the club. ठीक है. Ideally, we wanted him to go in the January window so we could get some money. But it's not happening. भाई पता नहीं क्यों नहीं हो रहा. I have added people already. Yes. 2 बंदों के आए थे, मैंने उनको ऑलरेडी ऐड कर दिया है.
जय श्री राम अनुज भाई। गौरव भाई मेरे को एक बार ट्विटर पे टेक्स्ट कर देना, अपना नंबर टेक्स्ट कर देना, मैं उसको ऐड कर दूंगा खुद से, ठीक है? या फिर मैं ट्विटर पे लिंक भेज दूंगा, फिर ट्राई करना। सुनील भाई, दे आर नॉट गिविंग अस द डेट, ठीक है? जस्ट इमेजिन, पीएल का सीईओ बोल रहा है आई नो द डेट बट आई कैन नॉट टेल यू राइट नाउ। क्या बोलूं मैं इस पे? भाई फेडरेशन अलाउ कर देगा, द गवर्नमेंट हैज टू अलाउ, फेडरेशन के हाथ में नहीं है, इवन इफ द फेडरेशन इज द फर्स्ट स्टेप। भाई फिफ्थ राउंड होता है, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं तुम्हारा क्वार्टर फाइनल, सेमी और फाइनल। And that's why it says 2 questions. Of course भाई, हमारे पास ऑप्शन क्या है? Onana is at AFCON, Bandier will start. Purely on merit basis नहीं भाई, मेरिट का क्या करे, अच्छा डाले। It's not about merit always. ऐसे तो फिर मर्डर को खिला दो यार, कि फुटबॉलर अच्छा है क्या, वो मर्डर ही तो किया है, खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है। I started watching football in 2006. 2006 World Cup was my first World Cup, you know, and actually the first taste of football, to be honest. भाई ये रूमर्स हैं, and these are laughable rumors. I have been saying this. This is called desperation reporting. कि भाई मेरे आर्टिकल्स कोई पढ़ नहीं रहा, मेरे आर्टिकल्स कोई पढ़ नहीं रहा, तो मैं उसमें डाल दूं कि भाई कुछ भी डाल दो, मतलब यू नो, तो बिना सर पैर की बातें, so that people will hate me, people will laugh at me, but people will read it, people will share it, कि भाई देखो देखो क्या चूतिया बंदा है, क्या लिखा है इसने, you know. So that's what desperation reporting is, and that's what people are doing at this point of time, you know. Vinicius लिंक कर दो, अब कल को बोल देंगे मुंह उठा के कि भाई सर एलेक्स फर्ग्यूसन इज कमिंग बैक टू मैनेज मैन यूनाइटेड। ऐसे रिपोर्ट्स का क्या करोगे? यू कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम राइटिंग, राइट? एनी इनकमिंग जनवरी में नहीं भाई। फॉर मी रेपिस्ट डजंट डिजर्व अ सेकंड चांस। तो एक को चांस देना है भाई, तू दे, मेरे को नहीं देना, बात खत्म। भाई डिलीट इज समबडी, आई एम नॉट सेइंग कि वी आर लिंक्ड विद हिम बाय टॉप टियर, ठीक है? टॉप टियर जर्नलिस्ट्स आर नॉट लिंकिंग डिलीट टू अस, बट सेकंड टियर एंड थर्ड टियर, you know, they are just making a story at this point of time. I think it's not going to happen, but we might be keeping an eye, because we are keeping an eye on a lot of CVs at this point of time. If Dilip is one of them, because he is former Ajax, we all know the love of Eric Ten Hag for former Ajax, so no loans, zero. Same number of loans as successful Dalot passes in a game. Sorry, successful Dalot crosses in a game, you know. So that's the number of loans we are looking at. And David Villa was one of the most underrated here. You know, the team that Spain built at that, you know, at that point of time, it was just, you can argue, one of the best team to ever play football. चाहे वो बार्सिलोना क्लब लेवल पे हो, चाहे स्पेन टॉप लेवल पे हो, सिंपल। Euro very difficult, very difficult. Yeah, I think France will be contenders, England will be contenders, but then I see Southgate, and then I am like, you know, even if they reach the semi or the final, Southgate will go defensive and they will be not winning the competition. So, अरे कहीं नहीं जा रहा भाई वो, he will stay with PSG. ETH, I don't see him getting sacked. Exactly. Exactly. For me, it's Amit. I think the one thing that Dalot does well is find out, you know, places where he can pick up the pass. But what he does with the pass, nothing. He cannot cross, you know, and the moment the ball is lost, we all know the defensive positioning of Dalot. So, World Cup qualifiers, I think it will take time. Because Euros will happen, you know, Euros will happen this year. World Cup qualifier will keep on going till 2025.
But that's how it should be done. And that's where I think England in past, they have been absolutely horrendous with. You know, Liverpool United की जो rivalry थी, I think they brought it on the pitch. Even with Chelsea, they brought it on the pitch. You know, our managers भी हमेशा से उनके वैसे रहे हैं कि भाई मैं क्या ही बोलूं. But yeah, good examples of Spain. You know, they're still Catalonia and Spain supporters. But अभी तो चलो स्पेन की हालत सबको पता है कि क्या है. But that team, they put the differences aside, outside the pitch. You know, जब पिच पे खेले, they played for Spain. Simple as that. उसके बाद कैटलोनिया करो, कुछ भी करो, वो अलग की बात है. Simple. Favorite left foot by रॉबिन. ठीक है, रॉबिन. और अगर लेफ्ट फुट में जाओगे तो रायन गिग्स. Since we are talking about favorites, Robin and Ryan Giggs. Of course, Liverpool, yeah. Absolutely Liverpool. But Jasim News is like Jasim, you know, was not willing to give a letter of financials कि भाई कहाँ से पैसे डालेगा वो. ये बात चल रही है अभी. ठीक है. The report that they have put up, उसमें ये बोला गया है कि भाई the amount of money that Ren wanted, they were not willing to pay. Ren wanted, I think, $35 per share. They were willing to pay $30 per share. उसके ऊपर वो जाने को तैयार नहीं थे. And officially on 15th of October, they got out. And bring who? किसको ले गया होगे भाई? लोग हमेशा जब बोलते हैं ना कि भाई इसको निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दो भाई, लाओगे किसको? I obviously want to know who you are going to bring. I always ask this question. हर किसी से पूछता हूँ मैं. इंडिया नहीं भाई, of course not. No chance, zero. चलो, thanks a lot for joining, प्रफुल भाई. मैं वही बोल रहा हूँ ना. This will always be there, but as I said, when they were on the pitch, all they cared about is winning trophies for Spain. ठीक है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं सोचा. So people can talk about Catalonia, they can talk about Spain, they can talk about fractions, but they won the trophies there. They won the World Cup, they won 2 Euros. So it was not a joke. कि 3 major trophies तुम लगातार जीतो. Yeah, after that the decline came, and the decline is still there for me. Simple. अरे भाई इसका प्राइम रहा ही कितना है यार. असेंसियो का क्या प्राइम है भाई, मेरे को ये बता दे सके. What is the prime of Asensio? फिर मैं बोलूं यार प्राइम ऑफ यानुजाई. प्राइम ऑफ यानुजाई वाज 1 season. Future of Ahmad totally depends on whether he can deal with the physicality of PL or not. If he cannot deal with the physicality, I think he will be gone. But the options that we have right now, with Pelistri going out on loan, most likely to Granada, Anthony and Ahmad will be there for the next 5 months, with Sancho already going out. So I think we will end up selling Pelistri because we have paid a lot of money for Ahmad. And Ahmad will be given another season, I think. Of course not. Of course not. Money talks, bro. If you have the money, you don't have to worry about anything. If you don't have the money, you will be like Everton. You will be slapped with charges after charges after charges, while the other team with 115 charges sits and chill. निखिल भाई देखो, बहुत सारी चीजें होती है. ठीक है, ये बेचना 100% ये बेचना ही नहीं चाहते थे, and they wanted 100%. तो एक तो ये हो गया. But हाँ, as I have said, Qatar did not put their money where their mouth was. जो भी PR चलाया, but जब पैसे देने की बारी आई, he could have easily, मतलब अगर वो sensibly, I'm talking about Qatar, if they would have
been serious, ठीक है, अगर 100% सीरियस होता था they would have gone for 25%, ठीक है, बोलता चल ठीक है भाई मेरे को लिख के दे कि 3 साल के अंदर पूरा का पूरा क्लब हमारा होगा, and I think with 25% fans would have appreciated Qatar more कि चलो भाई ईगो साइड में रखा, they want 100%, we might have to wait for 3 years but okay, after 3 years it will be 100%. so अरे भाई मैं तभी तो बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि प्लेयर बुरा है, जस्ट सेइंग कि यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइम, तो प्राइम तो 1 साल का भी नहीं है संसियो का, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं इंजरी की बात नहीं कर रहा भाई, आई एम जस्ट सेइंग कि उसका प्राइम 1 साल का रहा है, इंजरी हो गई बंदे को, उसमें बंदा क्या करेगा? भाई रोमेयो से बेटर तो यार नहीं बोलूंगा मैं, बिकॉज रोमेयो स्टिल यू नो प्लेइंग, जब फिलिप्स खेला ही नहीं है 2 साल से, वो तो रोमेयो से बेटर कैसे होगा? आई कैन अंडरस्टैंड कि रोमेयो को लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, बट भाई कैल्विन फिलिप्स ने कुछ नहीं उखाड़ा भाई 2 साल में, ही इज ऑन द बेंच, एंड आई वुड रादर हैव अ रोमेयो इन द टीम हु इज विलिंग टू प्ले वीक इन वीक आउट rather than a Calvin Phillips who is willing to sit week in week out. होना ही था. Why are people surprised that India got knocked out? Arjun bhai, that's, as I said, I have used this term like 5 times already. Desperation reporting. The guy's, clause, release clause is 1 billion. He recently signed a new deal. He's the poster boy of Madrid. So whoever has written that report, just laugh. Just that's what I'm saying. I have not shared it. I have just laughed at it. Because sharing it means, spreading their propaganda and basically spreading their delusion. 100%. 100%. If backed in the window. Otherwise, same old story. It will be easily by 2025. Nothing gonna happen this year. The case will be in the court. It will go till 2025 easily. 100%. 100%. Right? See, United, even after 10 years, will be the biggest, link getter. Simple सी बात है. You will talk about United, you will get the views, you will get the clicks. 10 साल से कुछ नहीं जीता यार, एक प्रीमियर लीग ट्रॉफी नहीं है 10 साल से, and we are still the most relevant club when it comes to talking about the club. ठीक है, किसी को भी लिंक करना है हमसे कर दो. Benfica said they are not in talks, but in summer things might change. So we will have to wait till summer, Sunil bhai. So, देखो, Benfica will definitely ask for a lot of money. For me, the ideal pricing of John Away should be around 60 million max. And no one in their right mind should pay more than that. ठीक है भैया, बहुत टैलेंट है ना, तो बेनफिका तो अपने पास ही रख. let them see कि भाई क्या करते हैं वो, कि जब वो नहीं मिलते उनको 100 मिलियन और 120 मिलियन, what they are going to do? क्या करेंगे फिर? कॉन्ट्रैक्ट रन ओवर करने देंगे प्लेयर को? भाई नहीं लगेगा. When you have a proper structure ना सुनील भाई, तब नहीं लगेगा. जब तुम्हारे पास बिल्कुल अधेड़ दिमाग वाले लोग हो ना, कि सामने वाला 10 मांगे तुम 20 दे दो, तो सामने वाला फिर 40 मांगेगा तो तुम 80 दे दोगे, तो वही वाला बात है. The games that he has played well, but then again the injury continues. हर किसी का बनाया है भाई. At this point of time, ठीक है, I am not going to judge Enzo as well as Nunez, because अभी उनको आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, but still, looks like it's not value for money. It's as simple as that. Happy birthday to Licha. बिल्कुल. Manu and Casemiro can play together 100%. For me, they can. With the passing ability of Manu, he can play with anybody in the midfield. And we have seen the range of Casemiro's passing.
So I think both can play. ठीक है, अगर दोनों खेलते हैं then Casemiro will be the CDM, Kobe Manu will be the number 8. ठीक है, yeah, just behind Bruno. ठीक है, उसको बॉक्स टू बॉक्स वाला रोल दे सकते हैं, मतलब प्रॉपर नहीं, रनर नहीं, but just to give him more freedom with the passing because Casemiro will be behind. ठीक है, और जहां पे जरूरत है, जहां पे दोनों को डिफेंड करना है, तो बोथ कैन स्टे बैक एंड देन वी कैन प्ले Bruno and even another midfielder in the like we played against Man City at Old Trafford. जिस तरीके से हमने खेला and we choked them and we won the game. See, the thing is, I've been saying this, to beat anybody at this point of time, our players need to step up. It's not about injuries anymore. Almost everybody is back apart from Mount. 80 million. His training individually, he will be back with group training very soon, Sulim bhai. But top 4 कर सकते हैं finish. They can definitely finish top 4. भाई जिसको ग्रुप में आना होगा, मैंने लिंक डाल दिया है. If you want me to put up the link again, I will do it again. Hey Vikram bhai, how are you? It's been a long time. Glazers will eventually. Yeah, I think they will, but nobody knows the time frame. That's the problem. By Postecoglou is demanding players, and they have also been, suffering injuries. So Levy ना चाहते हुए भी Levy is signing players. Yep. Hopefully, man, right? Of course not, right? Who the hell wants Mourinho in 2024? Yeah. पागल हो क्या? क्यों चाहिए Mourinho 2024 में? For what reason? फिर लोग बोलते हैं कि भाई बैकवर्ड फुटबॉल एंड व्हाट नॉट. चलो, good to have you back, bhai, and congratulations. 6 months as a member. So we have 2 people today. One with 17 months, Jan bhai. One with 6 months, Vikram bhai. Bhai, अगर कोई membership में interested है तो मेरे को बताओ. I always talk about membership. I always want people to try it. अगर पसंद नहीं आए तो भाई उसके बाद मेरे को बताओ what I can improve. But I always ask everybody to try it once. तो अगर भाई कोई interested है तो भाई हाथ उठा दो comment section में ही. I will let you know how to get it. ठीक है, अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई. मेंबरशिप के लिए मैं फोर्स नहीं करता, मैं बस लाइक्स के लिए और शेयर के लिए फोर्स करता हूँ. रमेश, दैट्स द वर्ड. ही हैज डिसअपॉइंटेड मी बिग टाइम. चेल्सी नहीं लेगी भाई, मेरे हिसाब से न्यूकासल ले लेगी. न्यूकासल 100% ले लेगी अगर मोरिनियो भी इंटरेस्ट शो करेगा तो. तो I think Newcastle more than Chelsea in my opinion. Mourinho to Brazil. मुझे होता अभी तो नहीं लग रहा भाई. Brazil plays player football. Mourinho वहां जाके बोलेगा कि भाई 5 लोगों के साथ डिफेंड कर. Brazilians पागल हो जाएंगे. I don't think they will ever go for Mourinho. This is what I feel. विक्रम भाई, बेंजेमा से लिंक हो रहे हैं, but I don't see Benzema coming to United. I think he will stay in Saudi. So. अरे भाई तुम तो ऑलरेडी आई थिंक 16 महीने हो गए ना प्रफुल भाई. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 और 16 मंथ्स हो चुके ऑलरेडी. Of course I remember, bhai. Who do you think is our best player so far? Nobody.
going to be brutally honest, nobody has lived up to the expectation. At United, we always strive for the best, and I don't think anybody has lived up to the expectations. Chal, 15 months, जबरदस्त. नहीं भाई देखो, I think Benzema, I think is a thorough professional, is what I feel. And Benzema would have known that if he is willing to go back to any club in Europe, he is not going to give even 1/20th of what he is receiving in, Saudi. But chalo theek hai. I think he will stay over there. I don't see him moving. I think that's too much money to give up on, to be honest. भाई 100% consistent Garnacho भी नहीं रहा है. Although he's very young, I'm not expecting him to be, but I think Garnacho भी कर सकता है इससे ज़्यादा. Out of all, if you will see, then definitely Garnacho will stand out. Manu ने 3-4, so भी Manu, he has played 3-4 games, he has looked really good. So Michael Carrick को यार क्लब से दूर ही रखो. The moment these guys will come around the club, जो क्लब का फैन बेस है ना, वो पगला जाता है, चूतिया हो जाता है बिल्कुल. One loss and they will be like, अरे Carrick तो ये है, Carrick तो वो है, फलाना है, ढिमकाना है. Carrick and McKenna, they are thriving well. और भाई मेरे हिसाब से तो उनको 1-2 साल नहीं छोड़ना चाहिए वो क्लब. सिंपल. विक्रम भाई, फ्रॉम जनवरी, मतलब जनवरी में हमारे तो कुछ काम होता नहीं है ना. When we talk about United, तो जनवरी में तो कुछ करने होता नहीं है. So I am doing it every other day. November, December में I was not streaming regularly because family functions and all that thing, but I have come back to normal streaming. Every other day I am streaming as of now. और फिर जब मैचेस ज्यादा हो जाएंगे तो भाई फिर it will be like almost every day. Of course not. Of course not. I will close my eyes and I will be like, yes, come on, go. Of course, yeah, it's a no-brainer. For me, अगर मेरे को रैशफोर्ड को निकालना है तो दो ही बंदे हैं जो उसकी जगह ले सकते हैं. One is Mbappe, one is Vinicius, and for me, I think both are untouchables. Of course, I remember, bhai. Of course, I remember. Araujo links are rubbish. Araujo pe I think we talked yesterday. But I think Araujo links are absolutely rubbish. भाई फुल टाइम अगर स्ट्रीम करूंगा तो भाई घर नहीं चलेगा. ठीक है, जॉब है बट आई एम लुकिंग टू स्विच. तो जब नया जॉब मिल जाएगा भाई तो पार्टी करेंगे साथ में यहीं पे. नहीं भाई, टू मच टू अर्ली फॉर कैरिक. थोड़ा सा उसको फ्लरिश करने दो यार. भाई स्काई स्पोर्ट्स पे तो भाई स्काई स्पोर्ट्स, टॉप स्पोर्ट्स, जहां क्या ही बोलूं मैं, their insights at this point of time are more laughable than knowledgeable. ठीक है, सिंपल सी बात है. जॉबलेस डे है भाई. पुअर का नहीं पता, बट जॉबलेस जरूर है. I think Nani suffered with injuries that lead to consistency. Plus, Nani was never our first choice. Because of injuries or inconsistency, even if we wanted to keep him as our first choice, we never did that. So he had his moments, but overall, it was never there. देखा भाई, 20 मिनट देखा फिर बंद कर दिया. मेरे से उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता. I really love my मेंटल हेल्थ. ठीक है, यूनाइटेड भी मारे, टीम इंडिया भी मारे, सब कोई मार ही ले तो फिर तभी मैं कबड्डी देखता हूँ.
अरे भाई वही वाली बात है ना, जो कभी जिंदगी में कभी कुछ जीता नहीं उसको तुमने माइक पकड़ा दिया, तो यही होगा ना। डेफिनेटली फॉर मी एज वेल, I thought he will take some time to get into it, but इतना टाइम भी नहीं लेना था भाई that you are taking 5-6 months भाई क्या ही बोलूं, इन्होंने पहले अथलेटी बजाया, फाइनल में इन्होंने बारसा बजाया, and they are doing it even with players, so many players injured, so hats off. Kroos, I will go for Kroos. Will Gunnar finish in top 4? In my opinion, yes. Top 4 कर लेंगे, top 4 कर लेंगे. I think, with the breaks incoming, उनको पता है भाई, they will have to focus. They are not going to win the Champions League. They know it, right? So they will put all their focus and efforts in the second half of the Premier League. पटना पायरेट्स भाई, पटना पायरेट्स सिंस डे वन. मैं तो हूं ही बिहार का भाई, तो पटना पायरेट्स सिंस डे वन, पहले सीजन से. इस सीजन कुछ खास नहीं कर पा रहे, बट ठीक है, दे हैव ब्रॉट इन सम यंगस्टर्स, तो थोड़ा सा टाइम लगता है. बट वही है ना यार कि थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा. व्हेन यू टॉक अबाउट कबड्डी, सॉरी फॉर द ऑफ टॉपिक गाइस, व्हेन यू टॉक अबाउट कबड्डी, तो कबड्डी में भी यार 3 साल तक ना टीम में चेंजेस नहीं कर सकते, ऐसा करो सिस्टम, ठीक है. और कबड्डी में भी थोड़ा पर्स बढ़ाओ. आई नो कबड्डी ओनर्स आर नॉट अर्निंग लाइक आईपीएल और even for the comparison, even ISL or like that, but थोड़ा सा पर्स बढ़ाओ and make sure that you are improving the level of stadiums. मेरे घर वाले गए थे भाई नोएडा में मैच देखने, ठीक है. वहां पे भाई प्लास्टर पे बिठा रखा लोगों को, ठीक है. तो क्या ही बोल सकता हूँ मैं. ये देखो भाई, वी हैव अ लेजेंड इन द हाउस, हरजत भाई. हाउ आर यू मेरे भाई? लव यू टू. जीते में बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल. बैंगलोर अप एंड डाउन है भाई, बहुत अप एंड डाउन है. मैं तभी बोल रहा हूँ भाई, मैं तभी बोल रहा हूँ, that hats off to Madrid for what they have done. पहले सीजन से बैंगलोर भाई अप एंड डाउन, एज आई सेड. पटना पायरेट्स भी सही है. यूसीएल, लेट्स फर्स्ट क्वालिफाई फॉर यूसीएल मेरे भाई. Winning a UCL is a distant dream. Let's qualify. Let's talk about how are we going to qualify for UCL. भाई पर मैच रेशियो, यस, पर मैच रेशियो. आईपीएल का टाइम फ्रेम बस 2 महीने का है, तो पर मैच यस. ओवरऑल अगर उसको 9 महीनों का बना दोगे तो शायद नहीं कर पाएगी मैच. एनी चांसेस? यस, चांसेस है भाई, चांसेस डेफिनेटली है. But then for those chances to come, fall into your lap, you have to work hard. If you are not working hard, then it's not going to happen. You cannot rely on other teams' results. It's as simple as that. मरदूद भाई, कतार का ये न्यूज है कि कतार, ठीक है, जितनी पहली बात तो ये है कि जितनी मांग रही थी रेड ग्रुप, उतना ये देने को तैयार नहीं थे. दे लेफ्ट इन अक्टूबर. और उसके पहले भाई इनसे मांगा जा रहा था ये रिटन लेटर कि टेल अस फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू फाइनेंस दिस, तो वो लेटर देने को तैयार नहीं थे. सो दैट स्मेल्स फिशी. ठीक है, इफ somebody is willing to put up billions, तुम्हें पता होना चाहिए ना भाई where are those billions coming from. So they were not willing to showcase from where they are going to spend in order to buy the club. तो ये रिपोर्ट जो है ये यूएस में फाइल हुई है, ठीक है. एंड इट्स नॉट लाइक कि किसी रिपोर्टर ने उठा के कुछ भी बना के डाल दिया. तो आई एग्री मृत्युंजय भाई. Some thousands, hundreds of thousands, and I'm happy that they left the club. Yeah, club is all about staying together, whether you lose, whether you win, regardless of who the manager is. Simple. बिल्कुल भाई, आईपीएल के लिए तो बहुत लोगों का घर चल रहा है, बहुत लोगों का उजड़ भी रहा है, बहुत लोगों का चल भी रहा है. ये कौन सा गेम है भाई? व्हेन इज दिस गेम?
I expect Real to win here. ठीक है, I think Atleti started the season in a promising way, but they have gone back to what they do, defend, and hopefully they will score again. I am talking about bigger teams. When you don't have the mentality against a bigger team, that's what's going to happen. And in the meanwhile, Rohan Bhai gifted a membership, and that has gone to Gaurav Bhai. So Gaurav Bhai, congratulations on the membership. Quickly, guys, today I will give a shout out. Jehan Bhai, 17 months. Vikram Bhai, 6 months. Harjas Bhai, with a super chat. Harjas Bhai really means a lot. Your support in the last few months alongside few other people have been immense. ठीक है, मैं सबके नाम ले सकता हूँ भाई, because they are handful, but I absolutely love it the way you have supported me, guys. And Rohan Bhai with a gifted membership. So, Anudha Bhaiya, good evening. How are you? भाई हर किसी के रहना नहीं है ना भाई बस की सऊदी में. Not everybody can go out and stay in Saudi. So, चलो बढ़िया. नहीं आएगा भाई. We are laughing at it. We are not discussing it. No, even if they did not. No, see, the thing is, in Manchester they have support. And when you win, then obviously people from see, the thing is, you don't have to like City to go against United. You can hate United and you can go to their games as away fans. It's how it works. भाई दानिश भाई का तो 1 साल होने वाला है गिफ्टेड मेंबरशिप पे. Exactly. But see, our team has done well, But then again, just like men's team, the women's team is not well supported. So that's what happens. When you have to succeed, when you have to go against teams which are already settled, you have to go in full guns blazing here. You cannot keep on wasting time. नहीं भाई, नहीं देखा था. मैंने स्कोर लाइन देखा उठ के. मैं देखा विनीशियस की हैट्रिक. यार हैप्पी बर्थडे भाई. लिजांड्रो का बर्थडे है गाइस. जिन्होंने विश नहीं किया भाई सोशल मीडिया पे, आई हैव पुट अप अ पोस्ट फॉर लिजांड्रो एज वेल. So, in the meanwhile, those who wanna connect on Twitter, ठीक है, क्योंकि भाई ट्विटर पे भी चाहिए ना फॉलोइंग. ट्विटर पे भी भाई एक्सप्रेशन के पैसे मिलते हैं. थोड़े बहुत जो भी आ जाए तो चाहिए. Those who wanna connect with me on Twitter, this is the Twitter link, guys. Ravi bhai, how are you? Yeah, definite heartbreak. See, that's what happens. People, they go after success. All of a sudden, City won't win anything and they will search for another team. So that's how football works at times. Selling तो नहीं बोलूंगा. I think it's desperation selling. ठीक है. But we are basically, and it's done by Ineos. Just imagine we were letting go of Medbury for 17 million without a buyback clause. Ineos jumped in and they got a buyback clause. So I won't say it's good selling, but down the line we might be looking at getting some money, because when you sell academy players, that's pure profit. So that's what we are trying to do. बिल्कुल भाई. I don't care about awards here. People who know me, I have this channel for like 2.5 years now. People who know me, they know that it's a popularity contest. It's rubbish. Every FIFA award at this point of time is absolute garbage. भाई ऐसा ही रहता है. ऐसा ही रहता है. बिल्कुल कर रहा हूँ संकेत भाई. भाई देखो, obvious सी बात है यार. The entire fan base. See, the entire fan base outside England, they are glory hunters.
ठीक है, दे आर ग्लोरी हंटर्स। जो मैनचेस्टर में रहे हैं यार, जो इंग्लैंड में रहे हैं, दोज हु हैव सपोर्टेड फॉर 40-50 इयर्स, ऑफ कोर्स भाई, दे आर नॉट ग्लोरी हंटर्स। दे हैव फॉलोड देयर टीम टू लीग चैंपियनशिप, उसके भी नीचे, तो उनको नहीं बोलूंगा यार ग्लोरी हंटर्स, सिंपल। इट हैपेंस भाई, बिल्कुल। There is a clause on Hoyland? No, there is no clause. We don't put any clause. भाई मैं मजे के लिए देखता हूँ यार, टेनिस में मेरा ऐसा कोई फेवरेट नहीं है। I used to enjoy Rafael Nadal a lot, but since he is not there, तो कोई भी जीते। I don't have any hatred against Djokovic, क्योंकि बहुत ज्यादा जो नडाल वाले हैं ना, नडाल हो या फेडरर वाले हैं, they hate Djokovic. I don't hate Djokovic. ठीक है, बहुत टाइम पे he goes over the board at times, but ठीक है। नहीं भाई, awards are rubbish way before that. Officially after Feb. Of course, hope will be there, yeah. Hope will always be there. Without hope, if you are watching football, then it's of no use. I think so. I don't see anybody at this point of time who can take on Alcaraz, week in, week out. Once in a while, obviously, there will be an upset. But over a long period of time, no. I think Alcaraz is going to dominate. Unless or until there is some injury problems or something like that. No. They will switch to some other team. See, the thing is, we don't need fake fans. Yeah? We already have a very, loyal and very large fan base. So that's fine. I obviously watch. I watch the Grand Slams. Tennis के मैं सारे tournaments obviously बात है, it's not possible. I watch the Grand Slams. So, it is what it is. नहीं भाई, नहीं. I don't think so. 100% भाई, 100%. Sunday को बिल्कुल भाई. Sunday को I will do a members only stream. So members who have not filled up the form, please do that so that you receive the link for the members only stream. ठीक है, Sunday को definitely run भाई, 100%. He will stay for another year. That's what I feel. He will be backed by Ineos in the summer window. He will stay for 1 year, and if he cannot improve, then he will be let go of. That's what I feel. Fair enough. कौन भाई, ये कौन है? No idea भाई. They are looking for new spaces, new land to build up a new training ground. So let's see. My glory hunters are with every club. That's what I say. It's not about just United. They are with every club. So that's how football works. You cannot see, the thing is, people, the younger generation, they will go after success. Those who have already followed United for a lot of years, they don't care. Those who have followed Liverpool, Arsenal for years, they don't care. But at this point of time, if somebody is not successful for a season, they might just move to another club. And I totally agree with him. 100%. When you are a team sport, there should not be an individual award. And on this note, I will end my stream for the night. I will see you guys. Kal to nahi bhai. I will see you guys on Saturday. And then I will see you guys on Sunday. Members only stream we will have. We will just chill. It's been a while, as Ron bhai said. So members only stream pe chill karna bhi zaruri hai. So stay safe guys. Have a good night. And I will see you soon.